follow. So what we've done is, so I'll set up some context of our conversation today. What we're essentially doing here is I will keep inviting people on the call as and when more of us join. We are recording this session also so that everybody else also knows. At Social Board, and since you are already associated with us, Doctor, at Social Board, what we try to do is we try to host periodic sessions where we try to invite experts. Sometimes we host these sessions on Instagram Lives. Sometimes we host these sessions on, WhatsApp in the form of WhatsApp Q&A sessions. Sometimes we also host very private sessions only for our paid users privately. And this is one of this is one of those sessions. And this is the same set of users who typically you consult on, you and Dr. Vaidri, who you consult at the start of their programs. So this is the context. And to everybody who's joined, welcome to our session. And to everybody else who will most likely be watching this session on a recorded format, because the timing obviously does not always suit everybody. But what we've also done is we have curated some questions from our community. We've taken some questions, so we'll send to everybody, and we had asked that we will be asking you certain questions, and we will be asking questions to Dr. Mona, and we've taken some questions already with us. So what I'll do is the structure of this session will be like, I will be asking you, we will be setting some context, we will do some discussion. We would love to learn from you about menstrual health and, how one should essentially sync their lives so that, what subtle changes do I make in my life all month so that I have better menstrual health overall. And then we've got certain structured questions that has come from the community members. And beyond that, anyone who's joined, if you have very specific questions, while we've noted down all questions that you send to your habit coach, अगर आपके और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप चैट पे लिख सकते हैं. मैं इनको एज एंड व्हेन डॉक्टर के साथ हम बीच में डाल पाएंगे, मैं इनको एड्रेस करवा दूंगा. सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर जॉइनिंग, एंड थैंक यू एंड वेलकम वंस अगेन डॉक्टर मोना, एंड thank you again, and my hello and good evening to everyone. Perfect. So let's actually, start. I would love to for you to set some context. And before we actually start, Doctor, why don't you give a small introduction about yourself also, so that, while I know most of them already know you, but just to set some more context for everybody. Oh, okay. All right. So, hello, everyone. I'm Dr. Mona Vats. I'm a consultant gynecologist and obstetrician. I'm into my private practice, and I have been associated with both government and corporate sector previously. And right now, I'm into private practice, and additionally, I am associated with Social Board app, which I feel is doing a tremendous and wonderful job in not just helping women in attaining that sense of well-being and wellness that is specifically women health oriented, but they are also doing a wonderful job in educating women, in making them realize, okay, whatever problems which are so common. Me as a doctor, I see so many people coming to me with queries that are actually, I realize, so common, but yet because of ignorance, because of hesitation, because of some social taboos associated with it, people don't openly talk about it. So I think you have opened a door, and congratulations for that. Thank you so much. Thank you so much. And thank you for introducing us as well along with you. So thank you so much. And we've got a couple more people also joining. So good to see the crowd. So we will quickly get into without wasting a lot of time, because I know you also have practice later in the night. So can you give some insights about at an overall level that, is there a benefit of something, we hear this term a lot called cycle syncing, that adapt your life around your cycle, adapt your nutrition around your cycle. follicular phase में कुछ और करिए, किसी और जब आपके पीरियड्स के पास आते हैं तो आप कुछ और चीजें लीजिए. तो कैन यू थोड़ा सा elaborate more on what exactly is cycle syncing? Okay, so basically this is a relatively newer term, like with time, as we are becoming more and more health conscious, and especially women, as they are getting more aware of their own well-being. So this is a relatively newer term that has gained momentum over last couple of years. So cycle syncing basically is when we try to sync our lifestyle, our routine,
around and according to our cycle. So basically, like previously, it was said that women's life is, I read it somewhere. It was a negative thing, but I read it that a woman's life is a slave to its hormones. So I think now, as medical science is progressing and we are getting, we are becoming more aware of what actually is happening inside our body, and as that knowledge is also reaching out to wider masses. So basically, we now have come out with certain changes that we advise as practitioners to a particular segment of people who are in need of those changes. Now, what happens is whenever there are hormonal issues, whether menstrual, reproductive system related or not, or in general, they are not curable mostly, but they can be managed. So by management, we say we have to incorporate certain changes in our exercise wise, or diet wise, or sleep cycle wise, or mental health wise, or emotional health wise, physical health wise. So there are certain changes which we can incorporate, and by managing those in the right way, we can manage to a great extent the hormonal disorders that happen in our body, or the hormonal dysregulations that occur. Yes, some part is genetic or hereditary that we cannot modulate, but this part, the lifestyle, with lifestyle changes, it is modifiable to a great extent, and it is very beneficial, especially now. In general, we say, okay, in general, health अच्छा होना चाहिए, आपका diet अच्छा होना चाहिए, एक overall सबके लिए. But there are specific people like women who have PCOS, women who have menstrual irregularities, women who are obese and are facing issues associated or as a consequence of obesity. Then women who are facing issues with infertility. So these specifically, we have seen lately that they benefit much when they incorporate certain changes, which, yes, overall it should be done at a broader scale. But when we know of certain things that can be done in certain phases of your cycle, so it will definitely help you. Thank you so much. Thank you so much for addressing this. And while now we will soon get into the questions that will come from our community. जो भी हमारी आज कॉल पे हैं, अगर आपके कुछ questions हैं, आप chat पे भी लिख सकते हैं. The questions that you've already not sent to your habit coach. अगर आपके कुछ ऐसे आप यहाँ लिख सकते हैं. We will try to address them during the course of a cycle also. So doctor, अभी मैं क्या करूँगा? So that मैं आपसे बीच में I will keep asking questions. I will also ask you for general advice for the larger community also. Sure. Anyway, yes. So the first question that I had from a community that we had was, my periods are irregular and most of the time varying between 12 to 40 days. So it's from a very small range to a very high range with heavy to light flow. My mood swings are also regular. Whenever I face low energy, I have mood swings. I have body aches, and mostly my stomach feels bloated most of the time. And what we've seen is this is a very common question that we keep getting. So, what are the subtle changes in my lifestyle that I should do over the month so that I don't have these issues in my menstrual cycle? Okay. So when the range this particular lady has told about 12 to 45 days, I think she told. So this is a very broad range. Now, normal range we say is 28 plus and minus 7 days. That is 21 to 35 days. Now, this is going beyond this range. So definitely this is not normal. I'll be frank. So there are definitely hormonal dysregulation or imbalance or some abnormalities occurring at hormonal level in her body. Also, the bloating, mood swings, which to a certain extent, which are bearable, which are not disturbing your routine, are again part of this hormonal changes that normally occur. That is the normal. But once these anything, in fact, that starts affecting your routine, affecting your mental health, affecting your physical health, or you start worrying about it, that means then that is beyond the normalcy. That is beyond normalcy. So, for this lady, I will advise her, she should seek medical health or at least consultation. You do not need to take, by consultation, I don't mean that you'll have to take medicine, but yes, by seeking consultation, you will be helped, you will be guided about like what all changes
you can make in your routine. And yes, broadly, there are certain things some tips that you can incorporate is now you can, if you're not taking a good balanced diet, you have to start focusing on your diet. Then at least we recommend at least 5 days a week, 30 minutes of exercise should be done per day, at least 5 days a week for any lady in general, and especially if you're facing certain such imbalances, if they have started in your body. So if you are overweight, if your BMI is high, then your target should be, like many times we see, if you tend to happen to lose 10% of the present weight, if you're overweight, in 4 to 6 months. So losing 10% of weight in itself will help you to drastically, come out of this situation. Okay. Okay. And So is it a sorry. fair goal to keep? Is it a fair goal to keep where we say that, if you have irregularities and you're also, let's say, slightly overweight, a 10% body weight reduction is a good goal, is a good starting point somewhere to keep. Sorry, I could not get that. Can you I'm just saying, is it a fair goal to assume that if I am slightly overweight and somebody also has irregular periods and all these issues, 10% weight reduction is a good goal to keep. Yes, yes, yes. Because see, being overweight, Okay. the obesity has a strong correlation with many metabolic, not just PCOS per se or menstrual irregularities, but many metabolic disorders in the body, and all these are interlinked in fact. So when you tend to reduce that weight by, it's if you're reducing by 10%. So by 10%, if we have given this term, that means we have seen uh, really great responses to that. Okay. Now, there are exceptions to every rule. I'm not saying that by losing 10%, you will, get drastic results. But yes, a major role is definitely played by obesity in causing these imbalances. Got it. And not just, I must add, not just exercise. You have to maintain that, and you have to follow good, healthy diet, high fiber diet. And if I go into diet, there are so many further aspects to that also. Basically, if you have, if I may add just here, your diet must be devoid of processed junk food or these processed carbs, especially. Okay. Or anything that is low in glycemic index. So, and also one small tip is for people, especially with menstrual irregularities and overweight, who are also trying to lose weight. Instead of having 3 major meals, we also recommend small, frequent meals to such people. Okay, and what is the purpose of these small meals? Is it to reduce the portion sizes that you're having, or is it to have continuous energy in your body? No, one, because there is insulin resistance. It's a thing that occurs in patients, especially with PCOS or menstrual irregularities. So insulin resistance means insulin is trying to push the glucose that your body is making into your cell so that it can work. But your resistance means insulin is there, glucose is there, but glucose is not able to enter your cell. So when it is not able to enter the cell, blood may the glucose level will keep on spiking. So so what happens when you are taking large meals over greater intervals? So when you have the meal, there'll be a sugar surge. So there'll be a spike. Then that sugar will fall drastically. Then again a spike. So this spike is really bad for the body. Okay. So having small frequent meals, your body, you are trying to provide the glucose to the body through your food. And by exercise or other means or medical measures or non-medical measures, you are trying to break the insulin resistance. So cell energy is also trying to enter your cell, so that major spikes are prevented by that. Got it. Thank you so much. For addressing this. We're getting a couple of questions from chat also, and I'll take them on priority because since these users are already here. One of the questions that I've gotten here is my periods are very irregular, and I have no PCOD and PCOS, and but I have very painful periods, and I'm usually not able to get out of bed for 2 days. And no matter the diet or workouts I follow, I am unable to lose any weight as well as improve the painfulness of my periods. Any suggestions from you for her?
So basically, the points this lady has, she has irregular cycles. One, She has if I'm irregular correct, cycles, very and painful, painful periods, very and painful. unable to lose weight despite following a good diet and workout. Okay, okay. So she says she does not have PCOS. So PCOS is not any particular term that or a label that we can give to any particular patient. So there are certain criteria when they are fulfilled. So we say the patient has PCOS. Yeah. Not always will a person with irregular cycles that there'll be polycystic ovaries on ultrasound that you see, which mostly the patient, they pinpoint, okay, agar polycystic ovaries ultrasound pe aaya, only then I have PCOS. It is not always that, and that is just one point. So basically, if you have obesity, you have irregular cycles, you have got yourself assessed for your hormonal profile, and they show a high LH level. LH is a hormone, luteinizing hormone is a level. And when you have got yourself tested during your menstruating phase, so if the LH is higher than the normal one, if your AMH level is higher than 5 or 6 or even higher, so then we say that you are having PCOS. So essentially it is not very important that polycystic ovaries should also be seen, but all these are this amalgamation of these symptoms, they will lead to a syndrome that will lead to inflammation in the body, generalized systemic inflammation, and then this is what is hormonal dysregulation, what we say. Absolutely. Her follow-up question was that, despite following a good diet, a good workout routine, she's still unable to lose weight, still unable to have, let's say, less painful periods. And she's been following the healthy diet for some time. Okay. Now, What one point. do we have So to basically, okay. So basically, there are 2 points. One, I'll try to address those separately. One, she said painful periods. Now, usually, not always, but usually with PCOS, patients have an ovulatory cycle. That is, the egg does not get released. So these patients tend to have painless period. But if she's having painful periods also, this because of dysregulations. Now, dysregulation will not always lead to PCOS. There can be other conditions also. Patient can develop fibroids. Patient can develop endometriosis. So, very painful periods are also indicative of a condition known as endometriosis. Yes. Now, endometriosis is something in another direction, but again, as a result of hormonal dysregulation. So, if it is very severe that she's taking, she has to take analgesics or painkillers every time, thrice a day for at least 2 days, and she's totally bedridden. And these pain, it's associated with other symptoms like nausea, vomiting, which are pain induced basically now. So I think it's high time she should consult a gynecologist for this. Yes, and because this needs to be addressed then. Yeah. And last point, she said she's unable to lose weight. Now, obesity, hormonal dysregulation, it is a vicious cycle. One will lead to a flare up in another thing. So more the imbalance, more the obesity, more increase in this imbalance. So here, to lose weight, both dietary aspects and exercise, both are very important. And what most commonly we see, patients, they try to set first an unachievable goal. That's why I always recommend set achievable goals first. So 10% of the present weight, if you try to lose in 6 months, I think that is a fair deal. And even if you don't lose that in 6 months, you can extend it to 8 months. What you think is achievable, but important point is consistency. What happens? Patients, they or in general, the people with these issues, they are diligently following such a routine for 3 months, 4 months, or 6 months, and then they tend to become lax. Now here, the fallback that happens, this becomes even more severe. Okay, so important point is consistency, your target. And I think what also is important, that when you're working towards achieving a goal health wise, now stop thinking that मुझे इतना मैं क्यों नहीं पहुंच रही इस पॉइंट तक, मैं क्यों यहाँ नहीं पहुंच रही हूँ. Forget it. Your aim is to work out, to have a healthy diet. Just follow it. Makes sense. Without overthinking about the results, basically. Makes sense. I think this is something a lot of our yoga coaches also tell us, which is that, Yes. the moment you put a goal to what you are doing, your body, looks at it mechanically. So वो उसका Yes. impact कम आता है. Yes. Yeah, when And you make it part of your lifestyle.
it is much more impacted in your body. And one more point I'll add, anything that is, if you're talking about the reproductive health only today, so reproductive health is one system, this system, which is very much affected and gets influenced by the state of our mind here also. So stress or high levels of free radicals that develop in the body, they tend to be really worsen this condition. So when you're setting goal and you're just targeting on achieving that and not on your own wellness, so you immediately you are off track then in this case. Got it. And another point, sorry, I'll just interrupt one small No, point. please. Yes. Now these targets or how much you will achieve in a particular time frame, it is very subjective and very different for everybody. One person can lose 10 kg in 6 months and one may just lose 3 to 4 kg in 6 months, and both are normal. Please let me make this very clear. Both are very normal. If you're losing, if you're on a decreasing trend, that is in itself a thing that you have already achieved. Yes. And I think someone can also recommend, someone can also consult a coach who's, who have experience guiding people on these. Yes. Yes. So important is that you are not just blindly people also tend to think that मैं YouTube पे वीडियोस निकालूंगी, वहां पे मैं ये उसका देख लिया, कर लिया, फॉलो कर लिया, 2-4 दिन किया, फिर कुछ दिन मिस हो गया, कुछ दिन अगेन फॉलो किया, ऐसा नहीं होता है. So basically I think if you actually want to achieve something, then guru हर जगह ही चाहिए. So take appointments with diet coaches or with dietitians, with nutritionists, with your exercise or workout coach, yoga coach, whatever suits you, your lifestyle, your routine, and your body. Whatever benefits. Yes. So basically, guidance is important. Guidance. Isiliyeh for consultation also, when I use the word consultation, when I say that you must go for a gynec consultation, that does not mean essentially I'm asking you, आप test ही कराओगे या आप medicine ही लोगे. Maybe you're not a candidate for that, but a gynecologist will better guide you depending on what your body needs, what your body needs. I think very, very valuable points here. कि अगर try yourself, अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे तो please take guidance. Yes. There's a reason. Help is out there. बहुत सारे platforms है. Social बहुत इतना अच्छा platform है. But help is all out there. You have to reach out. You have to reach out. Thank you so much. And one more thing, अगर किसी को भी audience में अगर आपने कोई question पूछा है, आपको लगता है कि our communication mode is in English, we should talk in Hindi, please आप अपने question में mention कर सकते हैं. The only reason we keep English as a mode of communication because we've got users from across the country. We've got users from the southern part of the country, users who are staying outside the country also. So इसलिए, but अगर किसी को भी हमारे audience में कोई भी यहाँ पे है जिनको लगता है कि कोई आंसर को हिंदी में भी elaborate किया जाए तो आप हमें लिख सकते हैं. By default हम इसमें वो standardized language consume करेंगे. Doctor, in the interest of time also, I'll थोड़ा सा fast track a couple of questions now. And I think we have some questions in the chat also. मैं quickly पूछ रहा था, Dr. देवभूति ने 2-3 questions पूछे थे, but I'll address the latest question now. Can you suggest, doctor, some protein sources as I'm unable to meet requirements in my regular diet? Okay. So depending on the person, I think I'll address for both vegetarian and non-vegetarian. Absolutely. So in general, we always say lean meat is better if I'm starting with non-veg people. So lean meat mein, it is chicken, it is your fish and eggs, the white part of the egg. They are good sources of protein that are they will not tend to increase your cholesterol, but they will just increase your protein buildup in the body. So they are good sources of proteins. If for vegetarian people, legumes, beans, even milk, then your tofu, your cheese, paneer, the cottage cheese, and specifically, I'll also tell you, if you make sprouts, immediately the protein content that is absorbable by the body, it increases manifold. Acha. Okay. So basically, if you're eating dal, it's good. So what vegetarians can do, you have to have at least at least 2 helpings of dal per day if you are a vegetarian. Also, besides this, the fixed dal portion you'll have in your lunch or your dinner, I'll suggest always keep sprouts ready in your fridge, which can be green moong dal and black chana or any other kind of sprouts that you like.
and always keep it ready. Now, this sprout, this protein will be easily digestible, better digestible. And second, the part of the protein the entire protein content does not get absorbed by the body. So the part that gets assimilated in the body, it will increase. Okay. Also, Okay. soaking the dals is very important. I'll just give an additional point. So some people who say हम बहुत ज़्यादा दाल नहीं खा सकते हैं, गैस बन जाती है, पचती नहीं है दाल, especially the heavier legumes in general जो बोलते हैं. So soaking is very important. So dals like urad dal, rajma, they have to be soaked overnight. Okay. And other dals, the split dals, they have to be soaked for at least 5 to 6 hours. So by soaking, it releases the phytates and other contents that lead to bloating. Okay. Also, again, the digestibility factor increases, better absorption will occur. Okay, thank you for this, and thank you for this, Doctor. I'm sorry, Devoti. I hope we've answered some questions. She had a follow-up question which we can quickly address, which is, do you have recommendations for non-food based? I think she's looking for some supplements, herbal protein supplements that you could recommend to her as well. Sorry, for what? I did not. For protein intake, for an increased protein intake, कोई herbal protein supplements का recommendation है? Okay, basically, best source is natural source. It is the best source. Yes, there are protein formulations easily available in the market. There are so many brands, who give protein powder form mein aate hain. There are, I'm not, promoting any particular brand, but GRD, Protein, there are many brands, yes. But you must also keep in mind that these brands, yes, they will give you a protein supplement which you can add in your milk or have it just plain with water, warm water. But these will also have a higher sugar content because they are sweetened. Okay. So either if you are diabetic or if you are in pre-diabetic stage, then I would recommend there are some sugar-free options also available of protein. Okay. But best is always the natural protein sources. Your curd and whey are rich sources of protein. इसके अलावा I think there are अगर therapeutic किसी को therapeutic अगर मैं recommend करूँ protein, so there are also protein biscuit. Now some people they say we cannot take this powder, हमसे पिया ही नहीं जाता है. तो protein medicated जो आते हैं form में, वो biscuits भी आते हैं. Absolutely, and tasty those bars as well, yeah, protein bars and those also. One more, yes, but I'll add protein bars जो है like granola bars और जो इसमें हाँ एक additional point है. आजकल there is a trend like people are following, हाँ मैं plain ये नहीं खा रहा, I'm not taking wheat or something, I'm taking oats or I'm taking quinoa. Now here the thing जो गड़बड़ कर जाता है कि people tend to take instant oats or the ready to eat energy bars. Got it. They are not good. I don't recommend for this PCOS kind conditions because ये जो instant हो गए, इनमें processing हुई होती है, so they are again high in the sugar content part. Got it. I think that. So I think वो plain oats ले लीजिए, उसको घर में और rolled oats आते हैं. Just saute and roast slightly in your own kitchen. Absolutely. It's very easy, not a great task. Absolutely. Thank you so much for this. Now we have a couple of questions which were around non-PCOS, and thank you so much for asking these questions. There's a question that we've been asked is, I'm not a fan of traditional birth control medicines. And I'm sorry, yes, traditional birth control methods. Can you suggest some natural family planning techniques that are little straightforward to follow? Okay. Now, so basically, all the natural methods, whether it is coitus interruptus or you are planning to have intercourse only during the safe period, they have very high failure rate. So if you are family planning, like trying to find some kind of contraceptive purpose, then sorry, it will have very high failure rates. We have seen patients who have had intercourse during menses, which is so far away. If you think like that, so it is so far away from the ovulatory phase, and it is considered the safest phase. But even during periods, we have seen people who have conceived.
Okay. So basically, especially जिनमें जितना ज्यादा irregularity है, उतना it is difficult to find out that exact ovulation day. So Okay. usme there are further chances of this method failing. So, but I like to add a point. The non-natural methods may, it is not essential you always take a pill. You always have to pop a pill or get yourself injected by some I think best is you go for a barrier contraception, that is use of Is it my internet? so it will have a double benefit and it is not giving any side effect to you or your partner. Okay. And also, some people who think that it interferes with the sexual pleasure part. No, it's a myth. It does not. Okay. Thank you so much for addressing this. Mhm. There's a very specific question also next. My question is that if there is GDM in your first pregnancy, pardon Okay. me, I'm not sure what GDM is. If there is Gestational diabetes mellitus, right? Okay. Okay. If there is GDM in your first pregnancy, will it be Mhm. during the second pregnancy also? And what are the chances that a GDM person will get sugar going forward? So two questions. The first part is, क्या second pregnancy में भी GDM रहेगा? Second part is कि sugar होने के कितने chances है? I understood. You want me to address this in Hindi? I think no. I think English should be good Okay. unless someone. So, yes, if you have had GDM in first pregnancy, there may be chances that you can have that in the subsequent pregnancy also. Now, not everyone will have GDM. GDM is gestational diabetes mellitus. That is, आप diabetic stage में आ गए, लेकिन सिर्फ pregnancy के duration तक. अच्छा. So, ये जो लोग होते हैं, yes, आगे चल के इनमें जल्दी डायबिटिक स्टेज आ सकती है या ये जल्दी प्री डायबिटिक स्टेज में आ सकते हैं और इनमें the percentage of chance of developing diabetes is slightly higher than the normal person, a person who was not GDM. Sorry, Okay. everybody's normal. Sorry. So yes, आपको if you are GDM in first pregnancy, आपको प्रिवेंटिव मेजर्स शुरू से ही रखने चाहिए ताकि आप प्री डायबिटिक स्टेज में भी ना जाएं. एक ट्रैक रखना चाहिए एटलीस्ट वंस अ ईयर. कीप अ ट्रैक ऑन योर ब्लड लेवल्स एंड इन द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी हमेशा कंसीव करने से पहले, क्योंकि जीडीएम के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है प्रेगनेंसी में. तो नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर यू आर प्लानिंग टू कंसीव, उससे पहले एक कंसल्टेशन डॉक्टर से लेके आप अपना फॉलिक एसिड बिल्डअप 2 3 महीने पहले से बना के अपना शुगर लेवल चेक कर ले कि कहीं पहले से ही तो अब नॉर्मल नहीं चल रहा है, जिसको शायद बाद में हमें पता चलता है, हम उसको जीडीएम लेबल कर देते हैं. समटाइम्स आप पहले से ही प्री डायबिटिक स्टेज में होते हो, तो पहले उन चीजों को चेक करके नॉर्मलाइज रख के देन प्लान योर प्रेगनेंसी. Okay. Thank you so much. And I'll be taking. I have a lot of questions actually. मैं थोड़ा सा उसको just filtering a couple of questions. So there's a question on also. I've had multiple miscarriages, and it's taking a toll on my emotional well-being. I am trying to conceive again, but my anxiety is on peak. Do you have some tips for me? Okay, so for once, if you have had multiple abortions, you say we have given a term to this. It is known as Yeah. so this is known as bad obstetric history, BOH. Okay. So there are many factors that can contribute to this. These can be genetic. Okay. These can be, by that I mean hereditary factors. These can be modifiable ones also. These can be because of certain infections that have happened in your body, which normally does not affect your body, but they will cause repercussions during pregnancy. Okay. Then there are certain immunological conditions in the body that can happen, which can also lead to this condition. So if you have had a history of multiple abortions, please, before you conceive, you get yourself tested for those conditions. There are so many. You'll have to get yourself assessed for first the basic things, your blood counts, your hemoglobin. These are the basic ones, should be in the normal range. Second, your thyroid levels should be in the normal range. Your sugar levels, they should be in the control range. Then your hormonal profile should be normal. Your periods should be regular. If they are not
there are methods by which first we regularize the menses, and then we ask you to plan. Then there are infections like rubella, cytomegalovirus, herpes virus. Now these are viruses which normally will not show any symptom, but they are very common cause of recurrent abortions. Now what happens, MMR vaccine अब तो सबने लगाया, but 20 years back tak not everyone got vaccinated for that. So you must know, if अगर आपको MMR का वैक्सीन नहीं लगाया था तो अपना इसका एंटीबॉडी टेस्टिंग कराते हैं, उसके लेवल्स असेस करके, then maybe your gynec will advise you condition depending on the report कि आपको इसके वैक्सीन लेने के बाद आप कंसीव कीजिए. कभी कभी MMR का हम वैक्सीन रेकमेंड करते हैं कुछ लोगों में, तो लेकिन हाँ उसमें यह भी ध्यान रखना, इस वैक्सीन के बाद आप इमीडिएटली कंसीव नहीं करेंगे क्योंकि लाइव अटेनुएटेड है. आपको 2-3 मंथ्स का गैप लेके उसके बाद आप कंसीव करें. देन देयर आर कंडीशंस लाइक एप्ला सिंड्रोम, एंड इसमें बहुत सारे ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब एंटीबॉडीज बॉडी में बनते हैं जो आपके खुद के ही बॉडी को, एक फॉरेन, नॉर्मली एंटीबॉडी समथिंग जो फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, इसमें आपके बॉडी के खुद के ही सिस्टम को अटैक कर रहा होता है, तो इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ट्रीटमेंट चाहिए होता है. सो देयर आर बेसिकली a very wide range of reasons that can be contributing to this. Very rarely, yes, sometimes yes, सब कुछ नॉर्मल आता है, फिर भी कोई क्वेश्चन इसी पे आया है चैट पे भी कि सब कुछ नॉर्मल है. I mean, there's a question on the that has come to me on DM, is that my friend has the same abortion history. She's done all, everything seems good. What could be potential things that he should go and check? Yes, अगर सब कुछ ठीक हो रहा है, then आपको इवन जेनेटिक स्टडीज पे भी जाना पड़ता है. कभी कभी कैरियोटाइपिंग भी हम एडवाइस करते हैं, मतलब बोथ द पार्टनर्स उनको अपना जेनेटिक टेस्टिंग कराना पड़ता है कि कहीं कोई इस तरह का कोई उसमें फॉल्ट तो नहीं आ रहा. Sorry to interrupt, but I think she said that even the genetic testing has been done. Okay, so yes, we do see patients like that. तो उसमें क्या है, once you have conceived, तो हम शुरू से ही सपोर्टिव ट्रीटमेंट डालते हैं. हार्मोनल सपोर्ट जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के इंजेक्टेबल फॉर्म्स, ओरल फॉर्म्स, व्हाटएवर सूट्स द पेशेंट, समटाइम्स इवन द वेजाइनल सपोजिटरी फॉर्म में देते हैं, वो देना पड़ता है. देन इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट के लिए देयर आर इंजेक्शंस लाइक भारग्लोब एंड एटसेट्रा, जो इम्यूनोमॉड्यूलेशन बॉडी में कराता है, वो भी हम देते हैं साथ में. समटाइम्स इवन हैव टू ऐड ब्लड थिनर्स, जो नॉट जस्ट टैबलेट फॉर्म में की, लेकिन उसका इंजेक्टेबल फॉर्म में इनॉक्सापरिन वगैरह के इंजेक्शन आते हैं जो डेली पेशेंट को लेने पड़ते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. सो इसमें बहुत लेवल का होगा. दिस इज नॉट द एग्जैक्ट लाइक, अभी मैं इतना डिटेल में नहीं शायद एक्सप्लेन कर पाऊंगी, बट यस इसमें बहुत सारा आपको मेडिकल सपोर्ट एक्सटर्नली भी लेना पड़ेगा थ्रू आउट प्रेगनेंसी. यस, still we are not god, everything is not in our hand, but yes, there is help available for these cases also. Thank you so much. There was one more. Yes, so I think there's a follow-up question from the same person, which is now that try again after 3 abortions. Sorry, can she try again after 3 abortions? Yes. Now I'll advise 3 abortions हो गए हैं. Now I don't know the status whether this lady has got herself assessed for the causes or not. One, take a break. अगर बहुत जल्दी फ्रीक्वेंसी में कंसीव किया है, I'll say take a break. 3 to 6 months का ब्रेक लीजिए अगर आप आइडियल अभी एज रेंज में हैं. 6 months का ब्रेक लेके अपना बॉडी वर्कअप कराइए पूरा. अपने मेंटल स्टेट को वापस एक मेंटल हेल्थ को पहले उसको असेस कीजिए और उसको जस्ट टेक केयर ऑफ इट. और स्ट्रेस इज वेरी डेट्रीमेंटल टू दिस. स्ट्रेस इज वेरी बैड फॉर दिस, क्योंकि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ाएगा स्ट्रेस हार्मोन, और खराब डाइट, ये सब जो भी स्ट्रेस हार्मोन्स बनाते हैं, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का भी बहुत अच्छा रोल होता है, वो भी हम साथ में देते हैं इन पेशेंट्स को. तो आप ब्रेक लीजिए, आप अपने आप को असेस कराइए, अपना फॉलिक एसिड बिल्डअप कीजिए, और अगर कोई भी रीजन नहीं मिलता है तो इस ब्रेक पीरियड के बाद कंसीव कीजिए. एंड व्हेन what should be that break period, like ideal break period?
समवन इज लाइक कोई ऑलरेडी एज जिसका बहुत हाई हो गया है तो हम तो 3 मंथ्स बोलते हैं, बट अगर आपकी अभी एज रेंज ऐसी है कि यू हैव अभी आप 28 टू या आप 32 तक के भी बीच में, तो आप आराम से 6 मंथ्स का ब्रेक ले लीजिए एटलीस्ट, और उस ब्रेक में बिल्ड योर सेल्फ अप। और आपको कंसीव करने के बाद डॉक्टर के पास जो जाना है, जो नॉर्मली लोग करते हैं, कंसीव हो गया तुरंत चले गए और कहते हैं हमने तो तुरंत ले लिया था कंसल्टेशन। नहीं, ऐसे केसेस में कंसीव करने से 2 to 3 months पहले आपको कंसल्टेशन लेना है। योर बॉडी, योर डॉक्टर विल ट्राई टू बिल्ड यू अप फॉर दैट पार्ट व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंसीव। सो इसमें हाँ बेसिकली काफी एक कॉम्प्लेक्स और काफी ब्रॉड रेंज है जो रीजंस जिनको वो असेस करेंगे। तो उसके बाद आप कंसीव करते हैं तो एक्सटर्नल सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ इंजेक्टेबल्स और टैबलेट्स और जैसे मैंने बताया पहले भी, वो हार्मोन्स भी होते हैं, वो ब्लड थिनर्स भी होंगे, इनॉक्सापरिन वगैरह, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स होंगे, ये सब कुछ एक कॉकटेल ऑफ मेडिसिन दिया जाता है in extreme cases I'm talking about. So you have to then go with it. Okay. Thank you so much, and I think very detailed answers. Thank you so much. I hope Kashajit has helped you. But I'll move on to some next set of questions also. So quick answers here, Dr. Mona, and I think so because I want to address broader set of questions via a couple of points, which is if I have discharges, monthly discharges, and they stink also, what is it that I should do during the month कि मेरे discharges वैसे stinky ना हो, मैं ऐसे क्या precautions लूँ अपने month में? Okay. For once, discharge जो होता है, that's a normal thing. It is the result of the hormonal changes that are occurring in the body, and the body is preparing your genitalia basically for conceiving. Nature का जो system था उसका target यही था कि conceive successfully हो. So during जब आप ओव्यूलेशन फेज के पास पहुंचते हैं, आपके जो सेक्रीशंस हैं वो बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, क्योंकि वो पीक पे होता है उस समय, तो योर सेक्रीशंस विल बी थिन, दे बी वेरी फ्लूइडी, बिकॉज ये फ्लूइड ही होगा जो एक स्पर्म को हेल्प करता है एग तक पहुंचने में। फिर जब वो ओव्यूलेशन फेज खत्म हो जाता है और अब वो फेज आता है कि बॉडी नाउ थिंक्स अगर कंसीव हुआ होगा तो अब मुझे इस प्रेगनेंसी को बचा के रखना है और कोई चीज अब इंटरफेयर ना करे, तो आपको वो ड्राई डेज से आएंगे, यू विल हैव थिक mucus like secretion and you will maybe you'll feel dry on those days, you will feel कि हाँ इन दिनों तो कम है मेरा discharge. So discharge is not something that is abnormal. प्रॉब्लम क्या आती है, स्पेशली जिन दिनों कुछ लेडीज में थोड़ा एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है विच इज अगेन नॉर्मल, और जिन दिनों में ज्यादा डिस्चार्ज होता है, मॉइस्चर होगा, व्हेन देयर विल बी मॉइस्चर, तो इफ यू डू नॉट मेंटेन अ गुड हाइजीन, वेरी गुड हाइजीन, वहां पे इन्फेक्शंस डेवलप हो सकते हैं, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, तो इन्फेक्शन होगा. सो मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ दिस स्मेल, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट, इज इन्फेक्शंस. तो अगर आपको बहुत सी, वन इज वजाइनल सेक्रीशंस, दे हैव देयर ओन स्मेल, दे हैव अ पेक्यूलियर स्मेल जो हर बॉडी का अपना होता है. बट इसके बियॉन्ड, इफ यू थिंक दैट इट इज स्टिंकी, इट इज वेरी फिशी, इट्स वेरी malodorous, if it is also, maybe it's not stinky but associated with itching or burning sensation or irritation, you always feel irritated, a sense of irritation in your vagina, and if it's associated with, it's thick curdy like, फटा फटा सा लगता है, फटे हुए दही जैसा, और इट इज वेरी ग्रीनिश और येलोइश प्यूरुलेंट पस जैसा लगता है, देन इट इज अ क्लियर कट इंडिकेशन दैट वहां पे इन्फेक्शन है विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड. सो गेट अ गायनेक कंसल्टेशन. वो फिजिकली एग्जामिन करेंगे उसको, वो चेक भी करते हैं कि किस तरह का डिस्चार्ज है, कितने अमाउंट में है, किस तरह का है, कौन सी तरह की इन्फेक्शन की वजह से है. मोस्ट कॉमन रीजन इसमें फंगल रहते हैं, कैंडिडिया बहुत कॉमन इसमें कॉज करता है, बैक्टीरियल वैजिनोसिस है, ये बहुत कॉमन रहता है. सो बहुत सारे होते हैं. और होता क्या है, जब बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा हो गई, जो अबनॉर्मल बैक्टीरिया है, जस्ट एज इन आवर इंटेस्टाइन वी हैव गुड बैक्टीरिया, वेजाइना में गुड बैक्टीरिया होते हैं. कुछ लोग बहुत एक सेल्फ ट्रीटमेंट कर लेते हैं, वो बहुत ज्यादा बीटाडीन, वी वॉशेस वेजाइना के अंदर तक यूज करते हैं, वेजाइनल वॉशेस, और बहुत ज्यादा केमिकल बेस्ड जो ये है, डेटॉल, बीटाडीन, सैवलॉन, ये सब भी यूज करते हैं, दे गिव डूशेस इनसाइड.
this is absolutely not recommended. It is actually very wrong. Okay. तो वेजाइना सेल्फ क्लींजिंग ऑर्गन है, आपको कुछ नहीं करना, इन्फेक्शन है नहीं है, हाँ इन्फेक्शन होगा, डॉक्टर आपको जो मेडिसिन देगा वो तो आपने लेना ही है। इसके अलावा रूटीनली यू जस्ट, जिन दिनों ज्यादा मॉइस्चर फील हो रहा है, change your undergarment and always wear cotton and natural fabric based garments। और स्पेशली पीरियड्स के दिनों में जब ज्यादा गीला रहता है अंदर, तो आप एक साइज बड़ा यूज कर लीजिए ताकि एरेशन भी रहे। योर this perineal region should get aeration, or maintain good hygiene. By that I mean just you have to clean your external genitals and not inside. अंदर कुछ नहीं डालना है, कोई डेटॉल नहीं, कोई savlon नहीं। this part of your body is very sensitive to chemicals also, और वो आपका बेसिकली गुड बैक्टीरिया को भी खत्म करेगा। तो जब गुड बैक्टीरिया खत्म होगा, वही है जो इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है, वही है जो स्मेल प्रिवेंट करता है, वो भी खत्म होगा। तो जिन जिनको बहुत रेकरेंट हो रहे हैं, उसमें एक और रीजन रहता है योर मेल पार्टनर। कभी कभी मेल पार्टनर्स में सिम्टम नहीं होता है, बट आप एक बार ट्रीट हो गए इन्फेक्शन से, अगेन यू हैड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, तो इन्फेक्शन वापस आ गया। सो आइडियली अगर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड किसी भी तरह का इन्फेक्शन, वी कॉल दीज एज STIs, अगर डायग्नोज होता है, बेस्ट इज both the partners should take treatment for it simultaneously. Got it. I think thanks for this. I'll take a couple of last questions now. You're not. My second last question here is, in my case, I'm having painful ovulation headache during that time, during my ovulation. In this cycle, I also get painful acne on my skin. Sorry, painful? She has painful ovulation. Yes. Painful headaches during ovulation, and she also has painful acne during her periods. Breakouts. And during periods, she also has tenderness and pain in her breasts. Okay. What recommendations do you have again during her monthly routine? What changes should we do? Okay. So painful ovulation, if it is she's very specific and she is very clear about it कि हाँ, when I'm ovulating तभी मुझे वो pain होता है। वो pain can last from few minutes to like maybe even sometimes up to 5-6 hours. This is more around headaches during that period, during ovulation. It is around headaches during ovulation. So that is a normal thing. Okay. It indicates आपके अंदर से वो egg release हुआ, तो वो egg जब हट के बाहर आया ओवरी से, तो वो pain हो गया। Sometimes it can also be associated with a slight bit of bleeding also. It can show as bleeding also. This is very normal. अगर वो सिर्फ उस ovulation के साथ associated है, if it is not going beyond 6 hours, मतलब sometimes it can extend to 6 hours also, और बहुत सीवियर भी ना हो, इतना भी ना हो कि आपको अगर बहुत ज्यादा सीवियर है, टॉलरेबल नहीं हो रहा, देन यू अगेन आपको स्कैन करा के या कंसल्टेशन लेके देखना पड़ेगा, कोई और रीजन तो नहीं हो रहा है इसका। सेकेंड, जो नियरिंग द पीरियड्स जो ब्लोटिंग आ जाती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस, स्वेलिंग इन ब्रेस्ट, फेशियल पफिनेस कुछ लोगों में आता है, सीवियर मूड स्विंग्स हो जाते हैं, all these are part of what we know as premenstrual syndrome. Now this is a range. बहुत माइल्ड जो है वो नॉर्मल है, वो हार्मोनल रिस्पॉन्स है बॉडी का। बट अगर अगेन जैसे मैंने कहा, एनीथिंग जो आपके मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब कर रहा है या फिजिकल स्टेट को डिस्टर्ब कर रहा है या आपकी रूटीन को हैम्पर करता है, देन we say okay, this is now part of premenstrual syndrome. Now this has to be tackled. इसमें अगेन आप कुछ स्पेसिफिक डाइटरी चेंजेस, स्पेशली जो सेकेंड हाफ आपका साइकिल है, आपका लूटियल फेज में, अगर आप कुछ स्पेसिफिक चीजों का ध्यान रखें, वैसे तो थ्रू आउट ही रखना है। क्या होता है ना, लूटियल फेज में आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन तीनों पीक पे जा रहे हैं। टेस्टोस्टेरॉन बढ़ेगा, एक्ने होगा, ब्रेकआउट्स होंगे, फ्लेयर आएंगे। जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है वो आपका ब्लोटिंग करा रहा है, ब्रेस्ट में स्वेलिंग करा रहा है, बेसिकली ये जो फिजिकल चेंजेस आप देखते हो प्रीमेंस्ट्रुअली। और थर्ड, एस्ट्रोजन जो अब ओव्यूलेट तो करा दिया, उसके बाद वो डिमिनिश होने लगता है। नाउ पीरियड्स जब आ जाती है, ये बेसिकली फॉल कर, इट्स बेसिकली दिस राइज, अ पीक एंड देन अ फॉल। तो ये जो राइज इनका हो रहा है, दीज विल लीड टू दीज सिम्टम्स। सो इसमें आपने क्या करना है, एक रूटीन बना लीजिए कि डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी एंड द फेज ऑफ पीरियड यू आर इन, आप उस हिसाब से एक्सरसाइजेस को फॉलो करें। अगेन नाउ दिस इज समथिंग दैट इज पार्ट ऑफ साइकिल सिंकिंग। हाँ, सो आप ड्यूरिंग व्हेन यू आर मेंस्ट्रुएटिंग, आप लाइट वॉक्स, लाइट जॉग्स, वॉक
कर लिया, बहुत इजी फ्लो योगा कर लिया, ये कर लिया, और जस्ट स्लाइड स्ट्रेचेस। बेसिकली तब आप लो एनर्जी फेज में है, तो जस्ट कीप योर बॉडी रिलैक्स्ड। फिर आपका जब फॉलिकुलर फेज आता है, जब आप दैट इज जैसे पीरियड खत्म हुआ और ओव्यूलेशन से पहले तक का जो टाइम है, तब आप धीरे धीरे एस्ट्रोजन बढ़ेगा, वो उसको एनर्जी चाहिए आपको। तब आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बेस्ड एनर्जी सोर्सेज ऑफ ले, मतलब खाने में वो लें। उसके बाद जब आपका ओव्यूलेशन आएगा, अब आप पीक एनर्जी में है, बॉडी में काफी सारी एनर्जी होती है, आप मूड वाइज आप स्टेबल होते हो, अभी ये वाले सिम्टम्स नहीं आए हैं, तब आप इंटेंस एक्सरसाइजेस कर सकते हैं उस समय पे। यस, एंड उस समय में यू कैन ऑल्सो ट्राई आउट एनीथिंग न्यू यू वांट टू ट्राई। आप कोई नए तरह का एक्सरसाइज ट्राई करना चाहते हैं उस समय के बाद से। अब ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेज जो आ गया, देन यू हैव टू फोकस ऑन एनर्जी सोर्सेस। कौन सा वाला? नाउ द प्रोटीन पार्ट, लीड प्रोटीन। और इसमें इस फेज में क्रेविंग्स भी बहुत होती है, बट उस क्रेविंग्स को यू डोंट हैव टू गिव इन। वो क्रेविंग्स जो हो रही है उसमें स्पेशल ध्यान रखना, आपने बी वाइटामिन आप फुलफिल कर रहे हो, आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम लेना है ताकि वो ब्लोटिंग को थोड़ा हैंडल करे। उसके लिए आपके लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, आपके क्रूसीफेरस फैमिली जो होती है सब्जियों की, जिसमें ब्रसल्स स्प्राउट, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये बहुत हेल्पफुल होता है। देन बीन्स आर वेरी हेल्पफुल। योर ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो फूड है, क्योंकि एनर्जी भी चाहिए बट द गुड एनर्जी, तो हेल्दी फैट्स। तो उसके लिए आप जो है, इफ यू आर वेजिटेरियन तो आप वॉलनट्स, योर सीड्स, योर फ्लैक्स सीड्स, योर चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, दे आर वेरी गुड। सेसमे सीड्स आर वेरी हेल्पफुल। देन टेक फूड्स दैट आर वाटर डेंस। क्यूकम्बर हो गया, या जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, दे आर वाटर डेंस फूड्स। So they will, all these will, so when you are not deficient in magnesium, calcium and mineral part also, so आपको ब्लोटिंग में थोड़ा हेल्प होगा। नो, आई एम नॉट सेइंग कि ये सब कुछ आपको बहुत कि कंप्लीटली हेल्प करेगा, बट काफी हद तक आप इम्प्रूवमेंट देखोगे। थैंक यू सो मच। यस मैम। अगर कोई भी चीज एक एक्सटेंड से आगे हो जाती है तो यू हैव टू सीक मेडिकल कंसल्टेशन डेफिनेटली। अश्विनी, आई थिंक यू वर सेइंग समथिंग, आपका कुछ? जी जी मैम, प्लीज। जो अपने अभी ओवुलेशन के टाइम पे मुझे ये बोला ना, अभी लास्ट जो डाइट बोला था, विटामिन बी, मैग्नीशियम और जो भी कुछ ऑप्शंस कैल्शियम दिए, तो ये यस, सो दैट्स फॉर ड्यूरिंग ओवुलेशन, दैट इज माय क्वेश्चन ओनली। बेसिकली यस, ओके, आई थिंक यू आर ट्राइंग टू आस्क कि मुझे वो उसी फेज में लेना है या नहीं, एम आई राइट? यस, एंड फर्स्ट आपने कुछ कॉम्प्लेक्स कुछ बोला, वर्ड याद Okay. नहीं है। See, basically, dear, you have to have a balanced diet। जो जनरल हम इस चीज को बोलते हैं, वो तो थ्रू आउट करना है। हम अगर साइकिल सिंकिंग की बात करते हैं कि स्पेसिफिक क्या ध्यान देना है, तो एनर्जी तो देखो आपको थ्रू आउट साइकिल में चाहिए। फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में अगर मैं ब्रॉडली बोलूं, तो वो जो एनर्जी है वो आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, वो होगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, आपके होल ग्रेन्स, आपके ब्राउन राइस, आपके ओट्स, किनुआ, ये वाले जो सोर्सेज हैं, आपके नट्स, ये आ गए। ठीक है, जब आप ओव्यूलेशन या उसके नेक्स्ट फेज में आता है, जो सेकंड हाफ ऑफ साइकिल होता है, उसमें अब आपका मेन देखो एनर्जी सोर्सेज 3 है, प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट से लेने की कोशिश करेंगे, दैट डज नॉट मीन कि आपने उसको ओवर कर देना है और प्रोटीन को कट कर देता है, ऐसे नहीं है। ये अगर आप स्पेसिफिक मुझसे पूछ रहे हैं तो, अदरवाइज इन जनरल आई ऑलवेज रिकमेंड थ्रू आउट साइकिल ही आपको ये चीजें फॉलो करनी है। सेकेंड हाफ में, क्योंकि अब आपकी बॉडी ओव्यूलेट कर चुकी है, अंदर पीक में हार्मोन्स चल रहे हैं, और एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है बॉडी को, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करने, क्योंकि बॉडी क्या सोच रही है कि शायद आपने कंसीव कर लिया, शायद एक बेबी आया है, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होता है। तो जो एनर्जी है उसको केटर करने के लिए आपको क्रेविंग्स बहुत होंगी उस टाइम पे, तो उनको हैंडल करने के लिए एनर्जी डेंस फूड, तो उसमें हेल्दी वर्जन ऑफ फैट्स, हेल्दी वर्जन ऑफ फैट्स आएंगे, जो आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के होते हैं, या जो अनसैचुरेटेड फैट्स, उसमें आपका ऑलिव ऑयल आता है, आपके वॉलनट्स आते हैं, अगेन आई सेड सीड्स, जैसे मैंने जो बताए थे, दे आर नट्स एंड सीड्स या गुड सोर्सेज ऑफ द नेचुरल एंड हेल्दी फैट्स, एंड लीन प्रोटीन। प्रोटीन से ज्यादा एनर्जी लेना है उस समय, तो लीन, इफ यू आर वेजिटेरियन तो आपकी दालें, पल्सेस, बीन्स, ये सब आ गया।
और टोफू आ गया, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन एंड फिश एंड egg. The white part of egg is very good for you. थैंक यू सो मच। एंड अश्विनी जी भी हम लोग एक चीज और करेंगे, हम लोग हमने ब्लॉग्स पे कुछ आर्टिकल लिखे हैं साइकिल सिंकिंग पे, क्योंकि आई नो आपने देखा था, आप अभी कुछ नोट्स भी ले रहे थे डॉक्टर की कॉन्वर्सेशन का, तो मैं इनको शेयर कर दूंगा वहां पे, एंड आई विल शेयर इट क्विकली, एंड आप मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं फॉर परमानेंट नोट्स। वी विल नाउ टेक लास्ट 2 क्वेश्चंस बिकॉज आई नो वी डॉक्टर हैड टोल्ड अस 40 minutes of time, we've extended it well beyond that. Utkarsha ji has raised a hand, and then we have a question here on the chat from Varsha ji. So we'll take these last 2 questions now. And Utkarsha ji, if you have something to say, please say. Yes. Yes. Quick question regarding the same topic which doctor was saying. आप जो बोले पल्सेस दाल या जो प्रोटीन ज्यादा लेना है, ज्यादा मतलब कैसे बैलेंस कैसे करें? ज्यादा मतलब 1 कटोरी खा रहे तो 2 कटोरी खाना है, या how exactly? Okay, basically, are you vegetarian? Okay, I'll just quickly Yes. ask you. Yes. वेजिटेरियन, ओके। सो बेसिकली जैसे मैंने कहा, थ्रू आउट ही आपको एक बैलेंस डाइट रखनी है। आपको कोई कभी भी कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ जो फूड होता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट, चाहे फैट है या प्रोटीन है, उसको टोटली कट आउट नहीं करना है। इवन आप अगर कभी डाइट प्लान्स भी किसी से लेते हैं, और कभी भी कोई ऐसा फॉलो नहीं करना है जो किसी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड पे फोकस कर रहा है, कि वो सिर्फ फैट रिच फूड या इस तरह का कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ फूड रेकमेंड जब करते हैं। आई डोंट रेकमेंड दैट। अगर आप लॉन्ग टर्म वेट लॉस या बॉडी वेलनेस को केटर करना चाह रहे हैं, तो व्हेन आई से, तो इट जस्ट मीन्स कि हमें एनर्जी, अगर आप देखो दिन में 2 बार तो दाल खानी है अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल आप थोड़ा सा फोकस उन दालों पे करेंगे, बट दैट इज ओनली द अमाउंट योर बॉडी विल नीड। और हाँ, कंसिडरिंग योर BMI and weight in you have to keep that in mind also. So it is just, आप उन दिनों सपोज 2 रोटी रूटीनली खाते हैं, उन दिनों आप कार्ब को कट करके आप 1 रोटी पे आ सकते हैं। और अगर आप दाल एक बार में आधी 1 कटोरी खा रहे थे, तो उसको आप थोड़ा सा जस्ट रिप्लेस दैट पोर्शन। आपने 1 रोटी कम कर दी, तो आपने आधी या पौनी कटोरी अपनी दाल दिन में बढ़ा दी है। बट उसके बजाय, एक बार के खाने के बजाय आप उसको ऐसे कर सकते हैं, उन दिनों you can have an extra helping of sprouts, so that is your protein. You can have one some salad kind of a thing जिसमें आपने थोड़ा पनीर ऐड कर लिया है। तो जो मैं कहना चाह रही हूँ कि बैलेंस तो थ्रू आउट रखना है, हर चीज आपने थ्रू आउट ही करनी है, हर तरह का न्यूट्रिशन लेना है। लेकिन जैसे सेकंड हाफ में क्रेविंग्स आएंगे, क्रेविंग्स विल टेंड टू मेक यू ईट। आप नहीं भी चाहोगे, आपका मन करेगा मैं कुछ कार्ब खाऊं, तो कुछ लोग ब्रेड खा लेते हैं, पास्ता पिज्जा या एनी काइंड ऑफ। तो ये प्रोसेस्ड जो कार्ब है, इसको कट आउट करना है। उसके बजाय गो फॉर अ हेल्दी स्नैक। नाउ अगेन आई रीटरेट कि when I say a balanced diet, I mean it should be done throughout. हाँ, स्पेसिफिक आप जब सेल सिंकिंग के हिसाब से पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि कौन से पार्ट में फर्स्ट हाफ में आप कॉम्प्लेक्स कार्ब से एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, तो तब आप अपना ब्रेकफास्ट में, जैसे फर्स्ट हाफ में आपने किनुआ खा लिया, और सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल में आप स्प्राउट को पीस के उसका चीला बना लिया। सो वहां पे आपने प्रोटीन पार्ट इंक्रीज कर दिया, और फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में आपने अपना कॉम्प्लेक्स कार्ब वाला पार्ट इंक्रीज कर लिया। Thank you so much, doctor. Thank you so much. And as we take the last question, अगर आप लोगों को कोई भी feedback about the session है, please share it on the group, on the WhatsApp groups that you would be a part of, or with us. It helps us, spread the message and motivation to a lot more people. And thank you, Utkarsha ji, for your compliment. I am taking the last question now. I'm taking the last question now. This is by Varsha ji, which is around, I get bleeding in normal days, not during periods sometimes. I had an ultrasound done. I repeat this. I get bleeding during normal days and not during my periods at times. And I had ultrasound done. It seems normal. I get endometriostial thickness of 17.2, which is very thick in general. Can I know what could be the reasons? I also have a very heavy period flow. Okay. What is the age, if I can know that? Varsha ji, if you're on the call, you could just tell us, because what your age is. Maybe you can also unmute and share your age if that is okay with you.
Yes, 25 is the age. 25. Okay. So, since she's saying I'm having bleeding during normal days and not during my menstrual days, I think what she means is कि जो उसकी date होती है when she expects her period to come, she does not bleed then. वो बाद में आएगी, maybe late or maybe early. So that is what is irregularity in your cycles. Okay. So one, irregular cycles, and second point she said very heavy flow during periods. Heavy flow and endometrial thickness of 17.2 also. Thickness. No, ET जो होता है ना, endometrial thickness, हाँ, इसमें ये आपका थ्रू आउट साइकिल वेरी करेगा जैसे ही आपने पीरियड खत्म हुआ आपका, क्योंकि अंदर की एंडोमेट्रियल जो लेयर है वही है जो शेड हुई है, तो ये 4 mm 5 mm इतना होगा, 3 to 5 mm के बीच में होगा. नाउ एज द डे विल इंक्रीज, अप्रोक्सीमेटली वी से कि हर दिन वो 1 mm से बढ़ता रहता है. So it is around 12-13 mm के अराउंड ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन फेज, 10 to 12 mm के अराउंड थोड़ा इसमें रेंज रहता है. और उसके बाद पीरियड जब तक आता रहेगा, क्योंकि ये बिल्डअप होता जा रहा है, तो इट कैन रीच इवन नॉर्मली इन नॉर्मल पर्सन इट कैन रीच टू 16 to 18 mm. नाउ अब इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया कब? when she was just about to bleed. अगर तब इनका she told me 17 mm I think. 17.2. Sorry? 17.2. 17.2. तो अगर it was immediately just before her periods, then वो thickness is not something of concern. But हाँ, अगर period हो गया फिर भी उनका बहुत ज्यादा ये thickness रहता है, तो then it is something that needs to be evaluated. So उसमें and also since he said कि हर बार ही बहुत heavy bleeding रहता है, again इसमें रहेगा क्या उनका जो period है बहुत जल्दी आता है और heavy रहता है, और नॉर्मल लाइक 1 month से भी ऊपर चला जाता है, ज्यादा गैप के बाद हैवी आ जाता है. सो इस पे थोड़ा सा वर्कअप उनको कराना पड़ेगा, इवैल्यूएट कराना पड़ेगा खुद को. Okay. Okay. Just I said, now this 17.2 mm can be normal, it can be abnormal, both things depending on what stage of her cycle she was when she got her scan done, right? सो एक्सट्रीम में कभी ऐसा भी करते हैं कि अगर इनके नॉर्मली भी इतना थिक रह रहा है तो वो फिर अंदर से बायोप्सी ले लेते हैं. एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग भी हम एडवाइस करते हैं कभी कभी कुछ लोगों में जिनमें बहुत ही हैवी पीरियड्स रह रहे हैं, बहुत मेनोरेजिया हो रहा है, तो वो सैंपल लेके उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं. तो फिर वो अंदर की जो लेयर का सैंपल हमने भेजा उसको स्टडी करके बताते हैं कि उसमें कोई चेंज तो नहीं है, कोई एबनॉर्मैलिटी तो नहीं आ रही है. और यस, इस सब के अलावा आपकी हार्मोनल असेसमेंट भी होगी. Okay. Thank you so much, Varshaji. I hope we've answered your query, and this was the closing question. If there are more, we can always take it up, on direct consultations. But thank you so much, Doctor, for coming, and thank you everybody for listening throughout. You've been a great audience, and Doctor, as usual, thank you so much for always helping us out. And thank you. You're welcome. Yes. Thank you so much. All right, and I'll be uploading the recording on both WhatsApp groups and the Social Board app in the next 1 or 2 days. तो आप लोग इनको वहां पे भी रेफर कर सकते हैं अगर कुछ होगा. Thank you once again. Thank you so much. Thank you, Swapnil, and all the best to you. You're doing a great job. Thank you. Thank you so much.